Hi friends, meet Raksha, standing at a big choice in her life. On one side, there's the everyday fun and friends. On the other side, a room full of books and study for UPSC exam. She asks herself, why UPSC? This question is like a whisper in her mind, pushing her to think hard about what she wants. It's a big challenge, not only for her, but lakhs of other students. This is the start of something big. With Oracle IAS, let's get ready and do great on the UPSC together by understanding why UPSC. Hi, my name is Hemant and I teach at Oracle IAS. I have given 5 UPSC mains back to back along with 2 interviews. I'll be a friend, philosopher and guide in this long and arduous journey. Let's get started. So, in this video, what would you learn? First thing is why to choose UPSC. नाउ बहुत सारे लोगों के सुपरफिशियल रीजंस भी होते हैं और बहुत सारे लोगों के सब्सटैंटिव रीजंस भी होते हैं. सो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से रीजंस आपको चूज करने चाहिए, कौन से रीजन आपको चूज नहीं करने चाहिए यूपीएससी के लिए. इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वाई. जो रीजन आपने चूज किया है वो सही है या गलत है और ये रीजन सही क्यों होना चाहिए इन द लॉन्ग रन. ओके, नाउ why is why important? That is why you should have a good reason for selecting UPSC. हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो यूपीएससी जर्नी है इट्स अ लॉन्ग हॉल. इसका मतलब क्या है? द थर्ड अटेम्प्ट, नाउ इफ यू सी दिस ग्राफ, जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं जिनका बेस्ट अटेम्प्ट है, द मैक्सिमम स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग सिलेक्टेड आर इन द थर्ड अटेम्प्ट, राइट? सो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को अगर यूपीएससी करना है तो एटलीस्ट मिनिमम उसको 2 से 3 साल चाहिए टू क्रैक दिस एग्जाम. तो 2-3 साल एक लंबी जर्नी है, राइट? दैट इज व्हाई यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड ऑन योर एम एंड गोल, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन दीज डेज इन लाइफ, राइट? सो इसके लिए आपको अपना जो रीजन आपने सिलेक्ट किया है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सुपरफिशियल रीजंस. जो रीजंस आपको सिलेक्ट नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से यूपीएससी एज अ करियर चॉइस. फर्स्ट वन इज नेबर्स सक्सेस स्टोरीज. नाउ बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके आस पड़ोस में कोई सिविल सर्वेंट बन जाता है, यूपीएससी क्रैक कर देता है एंड यू फील रियली मोटिवेटेड. शर्मा जी की बेटी भी निकल गई, तब तो मैं भी निकल सकता हूं. नाउ दिस शुड बी द रीजन फॉर यू टू सिलेक्ट यूपीएससी. मे बी हर सक्सेस कुड बी अ मोटिवेशन, बट you should see the kind of effort she has put behind that success. जब आप खेल रहे थे, when you're watching Netflix, when you're out there with your friends, traveling around, तब शर्मा जी की बेटी पढ़ाई कर रही थी, right? So ये रीजन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. Second is personal relationship. Now there was a movie, शादी में जरूर आना. Now here the guy, जो लड़का है वो यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाता है and he patches up with her girlfriend. Now this is short story, but in real life also I have seen students who have this kind of mentality that if they get selected in UPSC and become an IAS or IPS officer, then they will approach the girl or the parents or girl's parents and ask her hand for marriage. Now this shouldn't be a reason for you to select UPSC. The reason being, आप एक ऐसे फैक्टर पे अपनी प्रिपरेशन रख रहे हो जो बहुत ज्यादा फ्लक्स में रह सकता है. Now if your relationship goes downhill, then what will happen is you will lose your focus and maybe stop preparing or won't be able to put that kind of effort in your preparation. So ऐसा कोई रीजन अगर आप रखते हो तो आई वुड से रादर अवॉइड, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग हॉल. 3-4 साल की प्रिपरेशन हो सकती है और उसके बाद अगर सपोजिटली लड़की शी मूव्स ऑन, देन व्हाट? यू आर स्टक, यू आर एट क्रॉस रोड्स. सो दिस शुडंट बी अ रीजन. थर्ड रीजन इज सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स. नाउ लोगों को खुश करने के लिए
पेरेंट्स को खुश करने के लिए, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए आपने एक रीजन चूज कर लिया. नो, दिस शुडंट बी अ रीजन फॉर यू टू सिलेक्ट यूपीएससी. बिकॉज अगेन, आप किसी को खुश करने के लिए अगर ये यूपीएससी चूज कर रहे हो, तो अगर सपोजिटली आप सिलेक्ट नहीं होते हो तो वो तो परमानेंटली दुखी हो जाएंगे आपसे. एटलीस्ट आपके दिमाग में तो यही रहेगा ना कि मैं उनको खुश नहीं कर पाया. So this should not be the reason for selecting UPSC, because people who are not selected in UPSC, उसके बाद भी तो लाइफ है, right? They also live. But having this kind of reason where you're trying to make someone happy shouldn't be the reason. मैंने एक और चीज देखी है स्टूडेंट्स में, दे चूज यूपीएससी बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू. नाउ in this case again you are trying to make your parents happy, they become really happy कि मेरा बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है. लेकिन वो जो घंटे हैं जो आप रूम में बैठे हुए हो, उस समय आप क्या कर रहे हो? मे बी सिंस द रीजन इज नॉट राइट, so maybe you're not motivated for this kind of studies or this kind of hard work. So what will you do is, maybe you're watching Netflix, maybe you're playing video games in your room, and the parents are thinking that मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है. And what happens after 2 to 3 years? You don't get selected and you choose another field. But those 2 to 3 years where not seriously preparing, they get wasted. So आप पहले क्लियर रखिए कि क्यों आप यूपीएससी चूज कर रहे हो, right? Now substantive reasons to choose UPSC. Now this should be the reasons which I believe which will keep you motivated इन द लॉन्ग हॉल. जैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, राइट? सो यूपीएससी, when you become a civil servant, gives you an opportunity in very diverse fields to make a real impact on the society, whether it's policy making or policy execution. Your sphere of influence, the number of lives you touch, increases. So ये एक राइट रीजन हो सकता है आपके लिए. सेकेंड वन, द प्रेस्टीज. नाउ यूपीएससी में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो हमारी सोसाइटी में जो सिविल सर्विसेज है उनको एक माई बाप का दर्जा दिया गया है, राइट? पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज. सो द स्टेटस अटैच्ड विद द जॉब could be the reason where you are recognized by the society at large. So this could be one of the reasons, and it's the right reason I believe कि आप ये एक यूपीएससी को एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं. थर्ड इज प्रेफरेंस फॉर अथॉरिटी. नाउ एक सिविल सर्वेंट के पास बहुत पावर होती है टू मेक चेंजेस इन लाइव्स ऑफ पीपल, एंड एट द ग्रास रूट लेवल जहां पे लोगों को सही में इसकी जरूरत है वहां पे भी आप इम्पैक्ट कर सकते हैं. Why the reason which you choose is important. Now the whole preparation is like a sinusoidal wave. कभी आप बहुत हाई होंगे when your preparation is on track, when you're making your notes, when you're scoring good at mocks. But there will be at times जहां पे आप बहुत लो फील करोगे, आपको लगेगा क्यों कर रहा हूं, ये तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, राइट? At this particular point of time, when you are at the lowest point of your life, or maybe in the journey, you will remember कि मैंने इस journey में क्यों आया था. You should have the right reasons, because it will pull you up again to work hard. And here your parents, your good friends will pull you up. So it's always good to have the confidence of your parents, your good friends along with you, so that the whole journey doesn't isolate you. You should have a good reason for selecting UPSC. Okay, what are my final thoughts on this? I believe that you should have the right reason for selecting UPSC as a career option. As I said earlier also, that it will keep you motivated and less distracted in your preparation. So what is your why? Do let us know in the comment section. Thank you. Subscribe to the channel, and if you like the video, do like it. Thank you.